So today we are going to discuss 5 questions from money banking and finance topic, and within money banking and finance topic in this class I am going to discuss basically demand for money topic. So within that money banking and finance, day 1 is basically for the demand for money side. So demand for money, then supply of money, after that public finance. So entire week is basically allocated for money banking and finance. So the first question in the demand for money part, and I have tried to again introduce a few new questions. Explain Baumol's inventory theoretic approach of demand for money. This is inventory theoretic approach of demand for money, slightly different from basically the cost benefit approach, or slightly different from the cash management approach. तो ये क्वेश्चन बेसिकली पेपर के अंदर आ रखा बट डिफरेंट फॉर्मेट में आ रखा, दैट ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज नॉट ऑलवेज इंटरेस्टेड इलास्टिक और इंटरेस्टेड इन इलास्टिक. सो दैट क्वेश्चन आई थिंक पोस्ट कनीशन जो कंसेप्ट है ये 2 बार क्वेश्चन में है, बट दिस इज डिफरेंट वे टू एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी गिवन बाय Baumol. So explain the Baumol's inventory theoretic approach of demand for money. The first thing that you will write here is that Baumol is basically part of the post Keynesian approach. In the Keynesian approach, Keynes के description में transaction demand for money depend only on income. In the post Keynesian, even transaction demand for money depend upon the rate of interest. So that point has been explained by the Baumol. तो Baumol का एक concept है cash management का, जिसमें cost of going to bank और the interest foregone cost वहाँ से calculate करते हैं. And but this is basically the inventory theoretic approach in which it is stated that individuals maintain an inventory, and that is inventory of, that is people maintain some inventory of cash and bond. So they maintain some inventory of cash and bond. Now if they keep only cash, then what is the drawback or what is the cost? If they keep only cash, then they are sacrificing the rate of interest that they can earn. If they keep only bond, then every time when they have to make transaction, they will have to convert that bond into cash. So there will be a brokerage charge of every transaction. So we have to explain this inventory theoretic approach in that way. Now to explain that part, obviously there are certain, we will be using some equation, and by using that equation we can explain the inventory theoretic approach. So it is basically part of how much cash is being held as a part of the inventory. So in which lot I will be selling bond to convert it into cash, mainly we have to determine that. But bond to cash में अगर convert करें, inventory को रखने का अपना cost है. One part of the cost is the rate of interest that you will sacrifice. That means if you sell a certain amount of bond, then on that bond we will sacrifice the rate of interest. So how much rate of interest we sacrifice, we have to explain that part. Second is basically how much is the brokerage charge. That means every time will be, when person will convert bond into cash, there will be a transaction cost called as the brokerage charge. So we have to add brokerage charge into the interest foregone cost. That will be the total cost, and person will always try to minimize the total cost. So in order to minimize the total cost, what will be the lot size in which person will be converting bond into cash, we are basically going to explain this part. So when you explain this question, inventory theoretic approach, so let T is a real value of transactors income, जिसे आप income के format में भी कह सकते हो, Y के term में भी. T is the real value of transactors income, R is the rate of interest, K is basically referred as the lot size in which you convert bond into cash. जैसे हमने 4000 का बॉन्ड कैश में कन्वर्ट किया या 2000 का बॉन्ड कैश में कन्वर्ट किया, तो दैट 4000 2000 इज द लॉट साइज, एंड बी इज द ब्रोकरेज चार्ज. सो इफ आई राइट डाउन द टोटल कॉस्ट, देन टोटल कॉस्ट विल हैव 2 पार्ट. वन इज इंटरेस्ट फॉरगॉन and second will be brokerage charge or brokerage fee. Now what will be the interest foregone? इंटरेस्ट फॉरगॉन इज बेसिकली जो कैश हम होल्ड करते हैं उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेक्रीफाइस होता है.
तो हाउ मच कैश एक्चुअली वी होल्ड, कैश जो होल्ड करेंगे उसका एग्जांपल आप इस फॉर्मेट समझो. इफ अ पर्सन इज सेलिंग बॉन्ड वर्थ ₹4,000 on first day of the month and that 4,000 had been spent over the month, so I can say that the opening cash balance was 4,000, closing cash balance is 0, therefore the average cash balance will be half of it, that is 2,000. Rather than selling bond worth 4,000, if a person is selling bond of 2,000, so opening cash balance will be 2,000, closing will be 0, half of it will be basically the cash balance. So average cash balance hoga opening minus closing divided by 2. So how much amount you will get by selling bond, that depend upon the lot size. That lot size could be of 4,000, it could be of 2,000. So I am calling that number as K. So that K will become basically the opening balance, closing is 0. So cash balance will become K by 2 multiplied by R. Then what will be the brokerage charge? Brokerage charge will actually depend upon how much transaction you make. So if the annual requirement, if I say that the annual requirement is 24,000, तो 24,000 का अगर मेरा रिक्वायरमेंट है और मैं बॉन्ड को 4,000 के लॉट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 4,000 के लॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 ट्रांजेक्शन होंगे, 2,000 के लॉट में करते हैं तो 12 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, और जितने ट्रांजेक्शन होंगे हर ट्रांजेक्शन पे एक ब्रोकरेज चार्ज लगना है. सो दैट 12 और 6 विल बी कैलकुलेटेड एक्चुअली बाई डिवाइडिंग दिस T with K and multiply that number by B. This will be the total cost. ठीक है, ये हमारा टोटल कॉस्ट होगा. इस टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट मिनिमाइजिंग वैल्यू ऑफ K. सो वी डिफरेंशिएट दैट फंक्शन with respect to K. K के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करना है. सो दिस विल बी बेसिकली R by 2 and this will become minus TB upon K square equal to 0. So you can write TB upon K square is equal to R by 2. So K square is equal to 2 BT upon R, and the amount of K will be actually equal to under root 2 BT by R. इनकेस अगर आप डेरिवेशन वाला पार्ट स्किप भी करना चाहें नो प्रॉब्लम, जस्ट लर्न दिस. जो ऑप्टिमम लॉट साइज होगा वो अंडर रूट 2 BT by R होगा. एंड व्हाट इज द कैश बैलेंस? कैश बैलेंस इज नॉट K, कैश बैलेंस इज हाफ ऑफ K. K इज द अमाउंट इन विच यू आर कन्वर्टिंग बॉन्ड इनटू कैश, तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा. देयरफॉर वी कैन से दैट द ऑप्टिमम cash balance is half of that, so it will be half of under root 2 BT by R. यहाँ से ये फॉलो करता है जो कैश का डिमांड है, मनी का डिमांड है, दैट डिपेंड अपॉन B ब्रोकरेज चार्ज, दैट डिपेंड अपॉन R इंटरेस्ट रेट, एंड दैट डिपेंड अपॉन रियल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्टर्स इनकम. रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ब्रोकरेज चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और इनकम यानी T के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा. So when we explain this question, you have to start basically here. That Baumol's inventory theoretic approach is a post-Keynesian approach to transaction theory of demand for money. According to this approach, individuals maintain an inventory of cash and bond. An individual will maintain that much inventory where total costs get minimized. So ये नंबर T, R, B और K को मार्क कर देंगे वहाँ पे. द टोटल कॉस्ट हैज 2 कंपोनेंट. एवरी टाइम व्हेन पर्सन सेल बॉन्ड ही मस्ट पे ब्रोकरेज फी. सिंस ही स्पेंड्स ऑल हिज मनी एंड सेल बॉन्ड इन इक्वल लॉट साइज K, सो ब्रोकरेज चार्ज विल बी T by K into B, एंड इंटरेस्ट फॉरगॉन विल बी K by 2 into R. और फिर उसको कॉस्ट टोटल लिख देना, डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट कर देंगे 0 से. ठीक है, ये K की वैल्यू आ जाएगी और उसमें आप ऐड कर सकते हैं दैट दी ऑप्टिमम कैश बैलेंस. ऑप्टिमम कैश बैलेंस इन दिस एग्जांपल विल बी हाफ ऑफ इट, सो अंडर 1 by 2 अंडर रूट 2 BT by R. ठीक है, तो अब ये इस फॉर्मेट में क्वेश्चन
जनरली आपने नहीं लिखा है, बट अगर इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच कहते हैं देन यू हैव टू फॉलो दिस. अदरवाइज मैक्सिमम केस में जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं ट्रांजेक्शन थ्योरी, बामोल, कैश मैनेजमेंट, उसमें कॉस्ट ऑफ गोइंग टू बैंक एंड दी इंटरेस्ट फॉरगॉन के फॉर्मेट में लिखा गया है. हाउ मेनी टाइम्स पर्सन विल गो टू बैंक एंड व्हाट विल बी द ऑप्टिमम कैश बैलेंस, बट दोनों का आर्गुमेंट लॉजिक सिमिलर है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इज एक्सप्लेन Tobin's portfolio balance approach to money demand and how does it improve upon Keynes liquidity preference theory of interest. तो पहली बात, जो केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस में पर्सन इज मेंटेनिंग आइदर कैश और बॉन्ड, आइदर कैश और बॉन्ड. इफ वी नो दैट द इंटरेस्ट रेट विल बी अबव क्रिटिकल देन इट विल बी ओनली बॉन्ड, एंड इफ इंटरेस्ट रेट इज बिलो क्रिटिकल इट विल बी ओनली कैश. सो इट इज़ अ प्योर एसेट पोर्टफोलियो. पर्सन के पोर्टफोलियो में आइदर कैश होगा या बॉन्ड होगा. दैट वाज द आर्गुमेंट गिवन बाय द केन्स. टॉबिन ने उस कंसेप्ट को मॉडिफाई कर रखा है कि दैट कैन हैपन ओनली इफ वी नो फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट विद सर्टेनिटी, कि वो इंक्रीज होने वाला है या कम होने वाला है. बट इफ वी डू नॉट नो दैट देन वी विल मेंटेन अ मिक्स्ड एसेट पोर्टफोलियो. इट मीन्स वी विल बी होल्डिंग कैश एंड बॉन्ड बोथ. Person will be holding cash and bond both. So from that angle, Tobin has provided the portfolio balance approach. That is, person maintain a portfolio which will include cash and bond both, unlike Keynesian, where person maintain pure asset portfolio which is either only cash or only bond. So Tobin के approach के when you explain this Tobin's approach, few things that you can use as a graphical description as well, that there is always a risk associated with. When person will be keeping more of bond, there will be more of risk. If you want to avoid the risk, you will be holding more of cash. And individual preferences are risk averse. That means they prefer to avoid risk. इसे risk aversion theory भी कहते हैं. So if I write expected return, it is expected return on portfolio, and here I take a risk. So actually person dislike risk, but person like to have more and more return. तो माइक्रो सेंस में ये बैड कमोडिटी होगी और ये गुड कमोडिटी है. Therefore preference curve will be actually positively sloped. These are the different, you can say, indifference curve. So higher indifference curve represent higher level of satisfaction in this direction. Given this preference, what will be the liquidity constraint? Now liquidity constraint is determined by the total wealth. So if a person has certain amount of wealth, W0, if entire wealth is held in the form of cash, then the amount will remain same. But if the entire money has been spent in the form of or kept in the form of bond, then on that bond person will be getting some return. So wealth plus that rate of return. So wealth plus that rate of return, you can write it, that number as 1 plus R into W0. And starting from that point you can draw a straight line. This line will end here. So given that constraint, person is constrained by the wealth. Given that constraint, optimal choice will be determined by the tangency. But tangency is somewhere in between these two corners. Remember, इस corner का मतलब होता है person is maintaining only cash, and this corner means person is keeping only bond. But Tobin के approach में the person is maintaining a mixed asset portfolio. So proportion of cash is held and proportion of bond. So as you move right side, bond का proportion बढ़ेगा. As you move to the left, cash का proportion बढ़ेगा. But important point है that portfolio contain actually cash and bond both. Unlike Keynesian model where it is only cash or only bond. ठीक है, तो उस एंगल से टॉबिन के अप्रोच को आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 2 में. The Tobin's portfolio balance is part of the portfolio approach of demand for money. In this approach, we emphasize the role of money as a store of value. So it is part of the portfolio theory.
According to these theories, individuals hold money as a part of their portfolio of asset and cash is an asset in that portfolio. So combination of various assets. Money offers different combination of risk and return as compared to other assets. So as compared to the other assets, each asset has their return, each asset has their risk. So money offers basically that combination. Money offers safe nominal return, whereas price of bond may rise or fall. Portfolio theorists predict that demand for money depend upon risk and return offered by money and other assets. And according to Tobin, individuals are risk averse. That is why it is called as the risk aversion theory. According to this approach, wealth holders keep their wealth in different form of assets and combination of those assets is called portfolio. This portfolio includes some safe assets and some other assets involving the risk. The element of risk is measured in terms of fluctuation in price of those assets. जिस asset का price ज़्यादा fluctuate हो रहा है उसमें risk ज़्यादा है. So bond के अंदर risk है because value of bond can increase और value of bond can decrease. ठीक है, इसको आप ग्राफ के हेल्प से फिर एक्सप्लेन कर देते हैं. लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट ड्रॉ करेंगे. लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट इज नथिंग बट बजट लाइन एंड ड्रॉ द प्रेफरेंस कर्व एंड शो एनी टेंडेंसी टू शो दी डाइवर्सिफाइड एसेट पोर्टफोलियो. कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा. केन्स के अप्रोच में प्योर एसेट है, टॉबिन के अप्रोच में इट इज द डाइवर्सिफाइड एसेट पोर्टफोलियो. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन भी आई थिंक बहुत रेगुलरली नहीं पूछेगा. डिमांड फॉर मनी में यूजुअली अभी तक बामोल टॉबिन का मॉडल ही पूछा गया. द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज नॉट ऑलवेज इंटरेस्ट इन इलास्टिक एंड ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इलास्टिक. ये दो क्वेश्चन सिमिलर पूछे गए. सो इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच एंड बामोल टॉबिन, ये दोनों ही क्वेश्चन के फॉर्मेट में रखेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड. Now third is, how does Friedman restatement of quantity theory of money relate to portfolio approach? How does Friedman restatement of quantity theory of money relate to the portfolio approach? So Friedman restatement of QTM is nothing but modern quantity theory of money. Friedman ने classical quantity theory of money को restate कर रखा है, known as a modern quantity theory of money. And what is the restatement actually is that he has modified the classical argument by saying that the value of K, classical quantity theory money में रखेंगे, when you write MB equal to PY, या फिर अगर हमने उसको M equal to 1 upon B into PY लिखा है और वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया K से, तो क्लासिकल कंसेप्ट में ये K की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. Modern quantity theory of money as given by Friedman, the value of K is not constant. In fact, that proportion of income that person will maintain in the form of cash depend upon the rate of interest. तो rate of interest को Friedman ने ऐड कर रखा है कि क्लासिकल डिस्क्रिप्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं नहीं है. क्लासिकल कंसेप्ट कहता है कि मनी इज डिमांडेड ओनली फॉर ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड ओनली ऑन द इनकम. फ्रीडमैन के अप्रोच में मनी इज डिमांडेड बिकॉज फ्रीडमैन के कंसेप्ट में मनी इज हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो एंड दैट पोर्टफोलियो इंक्लूड कैश, बॉन्ड, इक्विटीज और इट कुड बी एनी अदर एसेट्स लाइक हाउस ऑल्सो. सो जो फ्रीडमैन का अप्रोच होगा, दैट फ्रीडमैन अप्रोच इज बेसिकली पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो का जो कॉमन आर्गुमेंट है वो लिखना है. मतलब टॉबिन अप्रोच इज ऑल्सो पोर्टफोलियो, फ्रीडमैन अप्रोच इज ऑल्सो पोर्टफोलियो. बामोल अप्रोच इज ट्रांजेक्शन. बामोल में ट्रांजेक्शन की बात हो रही थी, यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात करेंगे. बट केन्स और टॉबिन से डिफरेंट ये होता है कि केन्स के और टॉबिन दोनों में हमने दो ही एसेट लिए हैं, आइदर कैश और बॉन्ड. बट फ्रीडमैन के अप्रोच में कैश, बॉन्ड, इक्विटी और अदर एसेट्स को भी कंसिडर किए गए. सो इन दैट वे इट इज बेसिकली रिलेटेड टू दी पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्शन ऑफ डिमांड फॉर मनी. तो फर्स्ट पार्ट में इसको एक्सप्लेन कर देंगे दैट Friedman's restatement of QTM integrate it into a portfolio approach by considering money as one of the several assets that individual hold, not just as a medium of exchange. ठीक है, तो ट्रांजेक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, पोर्टफोलियो में it is not only the medium of exchange. In his view, the demand for money is influenced by
some factors that determine the demand for other assets such as wealth, return on other assets, individual preference for liquidity and risk. Friedman approach is an example of portfolio theory as they emphasize on store of value function of money. In Friedman approach, portfolio consists of cash, bond, equity and other assets, and demand for cash is determined by total wealth, division of that wealth between human and non-human, expected rate of return on money and other assets. So, the demand for money actually depend upon, that is why you write function as real money demand as a function of, it is a function of wealth, division of that wealth into human and non-human form, rate of return on bond, rate of return on equities and so on. You write that function. So, it is an aggregative demand for money concept. और Friedman exactly separate नहीं कर रहा. Friedman is related to the classical also. It is unlike classical also. Related to the Keynesian also and unlike Keynesian also. Related to Keynesian in the sense that rate of interest है equation में. Keynes के description में money demand में rate of interest है. But unlike Keynesian in the sense, Keynes talked about the component demand for money. Transaction अलग है, speculative अलग है. Friedman कह रहा है aggregate है. We can't separate transaction from the speculation. It is a classical in the sense, classical के sense में because वो broadly classical quantity theory of money को use कर रहा है and then modifying it. So it is not purely classical, it is neoclassical in that way. प्योर क्लासिकल के अंदर वो आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट के बराबर है, बट न्यू क्लासिकल में आउटपुट कैन बी मोर और लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट. So not exactly part of answer of this question, but just for information. So if you are just writing this question, you have to follow this part. Then question number 4. Compare and contrast. Read question number 4. Compare and contrast quantity theory of money with Keynes liquidity preference theory. सिंपल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को केन्स के लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से एक्सप्लेन करना है, रिलेट करना है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट. सो फर्स्ट थिंग अबाउट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज दैट व्हेन यू राइट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ MB इक्वल टू PY, this quantity theory of money explain relation between quantity of money and price, and according to it there is a direct and equiproportionate relation between quantity of money and price level, assuming velocity constant and assuming output constant. Simple quantity theory of money में money demand is not a function of rate of interest. Keynes के liquidity preference के अंदर when we explain the Keynes liquidity preference concept, then demand for money or liquidity preference is basically a function of income as well as interest rate. That is why LM कर में आप लिखते हो KY minus HI. That means transaction demand and speculative demand. Keynes talked about transaction demand for money which include precautionary and separately speculative demand for money. This transaction depend upon income and speculative depend upon the rate of interest. Keynesian liquidity preference theory is the basis for rate of interest determination. So according to the liquidity preference theory provided by Keynes, rate of interest is determined by supply of money and liquidity preference, and their equality determine the rate of interest. तो ये पॉइंट बेसिकली आपको हाईलाइट करना है कि केन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ पे डिमांड फॉर मनी के अलग अलग कंपोनेंट है. सिंपल क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी में देयर इज नो कंपोनेंट and it simply explain the relationship between price and quantity, quantity of money and price. So quantity theory of money is generally said to be a theory of price and inflation. So what causes inflation? More money. With more money there will be more price. So that point is basically explained here. QTM and Keynes liquidity preference theory offer two contrasting view on demand for money and its role in the economy. The classical QTM emphasized, explained by Fisher equation MB equal to PY, assume that velocity of money and real output are constant.
Therefore, there is direct and proportional relation between quantity of money and price table. The theory assumes that money is demanded mainly for transaction purpose, as medium of action is the main function of money. But Keynes के concept में it views demand for money as a choice made by individual for their preference for liquid asset. We prefer to keep liquid asset, and the most liquid asset is cash. So demand for money is demand for cash balance. फिर डिमांड फॉर मनी के 3 कंपोनेंट ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशन और स्पेकुलेशन को ऐड कर दीजिएगा. एंड अनलाइक द क्लासिकल क्यूटीएम, इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिमांड फॉर मनी ऑल्सो डिपेंड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आपको मेजर डिफरेंसेस पॉइंट आउट करने हैं बिटवीन क्लासिकल क्यूटीएम एंड दी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. नाउ कम टू दी 5th क्वेश्चन. नाउ दिस 5th क्वेश्चन ये 2020 में भी आई थिंक आ रखा है एंड 21 एज वेल. Regressive expectation model. So explain how Keynesian speculative demand for money is restated in the regressive expectation model. Point out the limitation. So how the regressive expectation model? First thing is that when you explain the regressive expectation model, this model is basically attributed to Keynes and developed by Tobin. तो Keynesian concept को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और केन्स के कंसेप्ट में भी जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है उसको हाईलाइट कर रहे हैं. दैट इज व्हाई वी कीप कैश इन एडिशन टू द ट्रांजेक्शन. सो क्लासिकल थॉट वाज दैट इफ यू हैव केप्ट मनी फॉर द ट्रांजेक्शन देयर इज नो अदर पर्पस ऑफ होल्डिंग मनी अपार्ट फ्रॉम दैट, because if you hold money apart from that, then you are sacrificing the rate of interest that you can earn on keeping bond. Keynes suggested that sometimes it is better not to keep bond but to keep cash. So naturally, if the return on cash is 0, then it can be better to keep cash only if the return on money will return on bond will become negative. I repeat, return on cash is 0 है, so why it will be preferred to hold cash? Only when the return on bond will become negative. So what is the return on bond and what is the return on cash? So when you explain the regressive expectation model, we are highlighting that point. So just see, when we explain the return on cash, so return on cash is 0, and when we explain the return on bond, then return on bond has basically 2 components. One is the rate of interest and other is the capital gain. It could be gain or it could be loss. So it is basically plus minus. Now if it is capital gain, then naturally it is better to keep bond, but if there is a capital loss, that means it is negative. So it is not that for every capital loss it is better to keep cash and not to keep bond. Now, but if this loss is greater than R, then the entire number will become negative. In that case, it will be better to hold cash rather than bond. तो ये पॉइंट रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल में फर्दर हाईलाइट किया जाए, और हाईलाइट करने के लिए इक्वेशन लिए गए दैट द रेट ऑफ रिटर्न कैन बी रिटर्न एज यील्ड अपॉन प्राइस ऑफ बॉन्ड. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज प्राइस ऑफ बॉन्ड है 100, on that 100 you are getting 5, so we can say a kind of 5% rate of return मिल रहा है. You can use this example for reference. So we can calculate the price of bond as yield upon R. अब price of bond हो जाएगा yield upon R. If you have to calculate the gain, so how to calculate the gain? Expected price of bond minus actual price of bond divided by actual price of bond. That means if and again this number can be positive or negative. This price of bond is say 100 and you are expecting it to be 120, so you are expecting a 20% gain. If it is 100 and this is 80, then you are expecting a loss. So in place of that price, जैसे PV लिखा है यहाँ पे y upon r, तो ये expected है, तो एक्सपेक्टेड में याद आएगा y अपॉन आर ई. y upon RE, R is expected rate of interest, and this will be y upon R upon
y upon r. If you simplify, this will be r upon re minus 1. That will be the gain. तो जब हम बॉन्ड रखते हैं तो बॉन्ड को रखने के हमारे बेसिकली देयर आर टू पार्ट ऑफ द रिटर्न. वन रिटर्न इज फिक्स्ड, वो तो सर्टेन है, बट कैपिटल गेन और लॉस, जैसे वो कैपिटल गेन और लॉस, तो उस आर में बेसिकली वी हैव टू ऐड दिस कैपिटल गेन और लॉस टू डिटरमाइन द ओवरऑल गेन. सो व्हेन वी एक्सप्लेन द ओवरऑल गेन, this overall gain will be equal to, you can write it by E, that will be your R plus G. तो R की वैल्यू होगी जो 5 रुपीज़ मिलना वो फिक्स हो गया. गेन विल बी R अपॉन आर ई माइनस 1. दिस इज द ओवरऑल गेन. रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल एक्चुअल में कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ अ एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट विल बी द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है. इकॉनमी का रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट हो रहा है, बट इट इज फ्लक्चुएटिंग अराउंड दैट नॉर्मल. सो इफ इंटरेस्ट रेट इज above the normal, we expect it to fall. If interest rate is below, we expect it to rise. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हो शेयर मार्केट में, अगर बेंचमार्क जो इंडेक्स है क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर है तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाता है कि इट इज़ गोइंग टू फॉल नाउ, और अगर इट क्रिटिकल से नीचे है देन वी एक्सपेक्ट दैट इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज. सिमिलर इज द केस विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, कि इट कैन नॉट गो डाउन फर्दर और इट कैन नॉट गो फर्दर अप. सो that is basically the critical value. So in that way, if it is above, we expect it to decrease, if it is below, we expect it to increase. That is called a regressive expectation model. So when a person will be indifferent between keeping cash and bond, a person can be indifferent between keeping cash and bond only when they offer same return. So cash return is 0 and bond return is this value. So I equate 0 with R plus R by RE minus 1, और वहाँ से R के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. दिस विल बी RE अपॉन 1 प्लस RE, and that number is called as the critical rate of interest. And what is critical about it? Criticality is that if rate of interest is above this critical, I will prefer to hold bond, and if R is lower than this critical, then person will prefer to hold cash. So you can draw it in this form. If I write that critical number as this RC, so if interest rate is above it, person will keep bond, and if interest rate is below it, individual will keep cash. Only at this critical number you can keep cash or you can keep bond. So how much cash we can keep, that depend upon how much wealth we have. तो ये डायग्राम इनफैक्ट सेम, इसके ऊपर ये लाइन बोल्ड कर देंगे, ये लाइन हॉरिजॉन्टल, एंड देन दिस इज मनी एक्चुअली डिमांडेड फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पस. स्पेकुलेटिव पर्पस का मनी डिमांड होता है. तो दिस कंसेप्ट इज बेसिकली कॉमन इन द केनिशियन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड सेम हैज़ बीन एक्सप्लेन इन द रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल. ठीक है. अब नेचुरली इसका जो ड्रॉबैक साइड है वो ये कह रहा है कि पर्सन इज कीपिंग आइदर ओनली कैश और बॉन्ड. मतलब केन्स की कंसेप्ट का जो ड्रॉबैक है वो इस कंसेप्ट का भी ड्रॉबैक रह जाएगा. इंडिविजुअल विल कीप आइदर ओनली कैश और बॉन्ड. दैट मीन्स वी नो विथ सर्टेनिटी व्हाट विल बी द फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंगली वी विल बिहेव दैट लाइक दैट. जैसे टॉबिन ने लेटर ऑन मॉडिफाई कर रखा है कि इंडिविजुअल डू नॉट नो व्हाट विल बी द फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयरफॉर दे मेंटेन कैश एंड बॉन्ड बोथ. क्लियर? सो दीज वर द 5 क्वेश्चन फ्रॉम डिमांड फॉर मनी सेक्शन. We will say past के क्वेश्चन में ये रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल एक क्वेश्चन है. यू कैन से दिस इज इजी वन, बट दिस बामोल इन्वेंटरी थ्योरेटिक एंड टॉबिन्स पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच. ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन कर लो. और ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है, बट फ्रीडमैन डी स्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स. सो दिस इज डिमांड फॉर मनी टॉपिक. सो विल कंटिन्यू विद दिस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी सेक्शन फर्स्ट. तो मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस इज ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 पार्ट. वन इज रिलेटेड टू द मनी. So within money you can divide into 2 parts, demand and supply.
Supply side will be basically dealing with questions from like money multiplier, deposit multiplier, H theory of money supply, whether it is autonomous or it is induced. So those questions will be taking in the supply of money section. ठीक है, तो अभी डिमांड फॉर मनी वाला सेक्शन कंटिन्यू रहेगा. कंटेंट जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं, जो नए क्वेश्चन आते जाएं अपार्ट फ्रॉम द पास्ट ईयर, उसको थोड़ा जस्ट इट इज़ नॉट दैट यू आर जस्ट लिसनिंग टू द वीडियो एंड जस्ट रीडिंग दी मॉडल आंसर, प्रेफरेबली राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, उसको आप एक बार अपने से खुद से लिख लीजिए. तो जो भी मॉडल आंसर यहाँ अपलोड हो रहे हैं, इफ़ इट इज़ अ न्यू क्वेश्चन, इनकॉर्पोरेट इन योर नोट्स. उसे एक बार आप विदाउट रेफरिंग टू लर्न इट, but without referring to it, just write it at least once, so that if the question will come, then only you will be able to write it in the same form. ठीक है, so we'll continue with next, that will be going to be day 16. ठीक है, सेम टॉपिक से कल कंटिन्यू रहेगा with the demand for money topic. Thank you.